Hello engineers, good morning. Today we are going to start exercise 11.3 11.2 આજે આપણે 11.2 સ્વાધ્યાય ચાલુ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. Due to shortage of time today I am taking lecture combined. પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ટેક્સ્ટ બુક લઈને બેસજો જેથી વાંધો આવે નહીં. સો રીડ ધ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન. વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટાર્ટ. બહુ જ ઈઝી ક્વેશ્ચન્સ છે, ચેપ્ટર બી ઈઝી છે. અગર બધી ફોર્મ્યુલા લર્ન બાય હાર્ટ કરીને બેઠા હશો, પ્રિપેર કરેલી હશે તો કોઈ જ વાંધો નહીં આવે. સો યાદ રાખો, આ બધા ચેપ્ટર્સ એવા છે કે ઓછું રિવિઝન હોય તો પણ આપણને પૂરા માર્ક્સ અપાવે. સો જોડે ને જોડે રિવાઇઝ બી કરજો અને લેક્ચર બહુ જ શાંતિથી જોશો તો હું માનું છું ત્યાં સુધી તમને આ બધા ચેપ્ટર્સના માર્ક્સમાં કોઈ વાંધો આવશે નહીં. રાઈટ? ક્વેશ્ચન નંબર 1. સો ધેટ three lines with direction cosines this are mutually perpendicular. મતલબ એનો એવો થાય કે ડાયરેક્શન કોસાઇન એટલે રેખાની દિશાના એકમ સદિશ આપણને આપેલા છે. means the unit vector in the direction of lines are given. We have to show that all three lines are perpendicular to each other. ત્રણે ત્રણ રેખાઓ એકબીજાને લંબ છે. whenever the lines are perpendicular, their direction vectors will be perpendicular, and if two vectors are perpendicular, their dot product will be 0. જો બે સદિશો પરસ્પર લંબ છે તો તેમનો ડોટ પ્રોડક્ટ એટલે કે અદિશ ગુણાકાર 0 થાય. so here L bar, M bar and N bar, three direction cosines એટલે કે એકમ સદિશો આપણને આપેલા છે. so let us start. first L bar dot M bar, taking dot product of two direction cosines means 12 by 13 minus 3 by 13. We are taking L bar and minus 4 by 13 dot 4 by 13, 12 by 13 and 3 by 13. Dot product, you know, sum of product of respective elements, અનુરૂપ ઘટકોના ગુણાકારોનો સરવાળો. so denominators are same, તો આપણે ડાયરેક્ટ ન્યુમરેટર જ જોવાના છે. 12 4 is 48, 48 by 13 minus plus minus 12 3 is 36 by 13 minus plus minus 4 3 is 12 by 13. 13 is LCM, so 48 minus 36 minus 12 by 13. Here the numerator is 0, so the final answer will be 0. That implies, we can say, that implies L bar is perpendicular to M bar. If the direction cosines are perpendicular, lines will be perpendicular. જો રેખાની દિશાના એકમ સદિશો પરસ્પર લંબ હોય તો રેખાઓ પણ લંબ થાય. તો પહેલી અને બીજી રેખા પરસ્પર લંબ છે. and M bar dot N bar, M bar is 4 by 13, 12 by 13 and 3 by 13 dot 3 by 13 minus 4 by 13 and 12 by 13. One minute, એકાદો એલિમેન્ટ સાઈડ મિસ્ટેક થી રોંગ લેવાયો છે. 12 4 હા બરાબર છે, બરાબર છે. Now by the dot product, 4 3 is 12 by 13, 12 4 is 48 will be minus by 13, 3 12 is 36 by 13, all have same denominator, so 12 minus 48
plus 36 by 13 equal to 0. That implies m bar is perpendicular to n bar. Similarly, we can prove n bar is perpendicular to L bar, and therefore hence result is proved. प्रूव हो रही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है और द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ थ्री लाइन्स आर गिवन. ત્રણ રેખાઓની દિશાના એકમ સદિશો આપેલા છે. અગર એકમ સદિશો જ પરપેન્ડિક્યુલર છે તો ઓબ્વિયસ રેખાઓ પણ પરસ્પર લંબ થવાની. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो, इट इज ऑल्सो वेरी इजी. देखो इसे तो मैं ज्योमेट्रिकली भी आपको दिखा सकता हूं. सो दैट लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू दिस एंड दिस. पहला બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખા એ બીજા બે બિંદુમાંથી પસાર થતી રેખાને લંબ છે એવું આપણે બતાવવું છે. તો देखो सी, मैं पहले को ए दूसरे को बी कहूंगा. फॉर दिस लाइन वी विल से सी एंड डी. वी हैव टू शो दैट लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू लाइन सी. चलो तो हम स्टार्ट करेंगे यहां से. डायरेक्शन ऑफ लाइन, direction of line through A 1 minus 1 2 and B 3 4 minus 2. A અને B માંથી પસાર થતી રેખાની દિશા A અને B માંથી પસાર થતી રેખાની દિશા, that will be vector line segment AB, means position vector of B. B નો સ્થાન સદિશ, that is 3 4 minus 2 minus 1 minus 1 2 1 minus 1 2 equal to 3 minus 1 2 4 minus minus 1 5 minus 2 minus 2 minus 4. Direction of line through two points are also given, 0 3 2 minus position C, ये लिखेंगे हम थ्रू C 0 3 2 and D 3 5 6 3 5 6. That will be vector line segment CD equal to position vector of D, means 3 5 6 minus 0 3 2 will be 3 minus 0 is 3, 5 minus 3 is 2, 6 minus 2 is 4. So now we have to prove this AB and CD are perpendicular to each other. तो बस easy by dot product we can show AB dot CD. AB is 2 5 minus 4 dot CD is
3 2 4 equal to 2 3s are 6, 5 2s are 10, 4 4s are minus 16 is 0. Therefore, vector line segment AB is perpendicular to vector line segment CD, hence proved. તેથી સાબિત થાય છે કે if AB and CD are perpendicular, so the lines in the direction of A and CD will be perpendicular. Clear point? So please write down. Okay, question number 3. So that the line through these 2 points A and B is parallel to the line through C and D. A અને B માંથી પસાર થતી રેખા એ C અને D માંથી પસાર થતી રેખાને સમાંતર છે. મતલબ બંને રેખા પરના બે બે બિંદુઓ આપ્યા છે. By these points we have to show these lines are parallel. So first of all we will find the direction of both the lines. Okay, here direction of first line, direction of first line, पहली रेखानी दिशा, that will be AB, means position vector of B. So 2 3 4 2 3 4 minus position vector of A means 4 7 8 equal to 2 minus 4 minus 2, 3 minus 7 minus 4, 4 minus 8 minus 4. Direction of second line, direction of second line, that will be CD. બીજી રેખાની દિશા CD, position vector of D minus position vector of C, that will be 1 2 5 minus 1 minus 2 1 equal to, चलो 1 minus 1 means 2, 2 minus 2 means 4, 5 minus 1 means 4. Now if these two vectors are parallel means collinear, the lines will be parallel. જો આ બે સદિશો સમરેખ થશે તો તેની દિશાની રેખાઓ પણ સમાંતર થશે. It is like this. It is A first line, it is second line. अगर AB और CD कोलिनियर है, जो AB અને CD સમરેખ છે તો obvious તેમને સમાવતી રેખા પણ સમાંતર થાય. Now taking AB is lambda CD लिखो या K CD meaning is same. चलो AB is what? minus 2 minus 4 minus 4 is lambda into 2 4 4. When we compare them, lambda will be minus 1. आप देख सकते हो कि minus 1 होगा तभी ये इक्वल होंगे, which is less than 0. So AB and CD have opposite direction, means they are parallel, right? Therefore AB and CD are collinear. मतलब AB અને CD સમરેખ છે. Therefore line AB and line CD are parallel. Parallel means समांतर.
बहुत इजी सम्स है, आप आसानी से लिख सकते हो। चलो यहां पर भी ऐसे बोला हुआ है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू द वेक्टर। कितना इजी हो गया। सी, वन पॉइंट ऑफ अ लाइन इज गिवन, सपोज इट इज ए बार and its coordinates are 1 2 3, which is parallel to means in the direction of b bar के एलिमेंट्स होंगे 3 2 -2। क्वेश्चन समझो बराबर। ए बार માંથી પસાર થતી અને બી બાર ની દિશાવાળી રેખાનું સમીકરણ, ઇક્વેશન ઓફ લાઇન થ્રુ ધ પોઈન્ટ એ બાર એન્ડ ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ બી બાર, બીકોઝ ધ રિક્વાયર્ડ લાઇન ઇઝ પેરેલલ ટુ બી બાર। तो इजी हो गया ना। See, here we have to find equation of line through a bar is a 1 2 3 with direction b bar is equal to 3 2 -2। नाउ सी, हमारे पास सारे इक्वेशंस है, वेक्टर फॉर्म भी है, सदिश स्वरूप है, कार्टेशियन फॉर्म पण છે, पैरामेट्रिक इक्वेशन मींस प्रचल समीकरण पण છે। तो सबसे पहले we will write vector form। See, first of all we will write vector form। सदिश स्वरूप લખીશું r bar is equal to a bar plus lambda b bar, where lambda belongs to r। So r bar is equal to, what is a bar? That is 1 2 3 plus lambda into 3 2 -2, where lambda belongs to r, which is required equation, which is vector form। Now Cartesian form। कार्टेशियन स्वरूप, सदिश स्वरूप। कार्टेशियन फॉर्म हमारा है, देखो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पे, x minus x1 upon l1, और you can write b1 according to formula is y minus y1 upon b2 is z minus z1 upon b3। आपको भी ये पता है। So here x1 y1 z1 are 1 2 3 and these are elements of the direction। So ये इक्वेशन बनेगा x minus 1 upon 3 equal to y minus 2 upon 2 equal to z minus 3 upon -2। It is Cartesian equation which passes through 1 2 3 and having direction 3 2 -2। ये according to theory है, so आप easily समझ सकोगे। So please write down this। Okay, question number 5, जरा ध्यान से पढ़ो बेटा। Find the equation of line in vector and Cartesian form, जो मैंने आगे वाले सम में आपको बताया था, which passes through this point and in the direction this। चलो कितना इजी हो गया। सी, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through a bar is equal to, point is given, that is 2 minus 1 4, and in the direction b bar is equal to 1 2 minus 1। exactly it is like the format of the theory। જે આપણને સૂત્ર આપ્યું છે એના સ્વરૂપમાં આખો ક્વેશ્ચન છે, રાઈટ। સો ફર્સ્ટ વી વિલ રાઇટ વેક્ટર ફોર્મ, मीन्स सदिश स्वरूप, that is r bar is equal to a bar plus lambda b bar, where lambda belongs to r। Therefore
r bar is equal to, what is a bar? That is 2 minus 1 4 plus lambda into b bar is 1 2 minus 1, where lambda belongs to r. It is required vector form. Now Cartesian form. And Cartesian form, that is x minus x1 upon b1. So डायरेक्ट में यहां से लिखूंगा, see these are x1 y1 z1 b1 b2 b3. So x minus x1 upon b1 is equal to y minus y1 upon b2 equal to z minus z1 upon b3, which is required Cartesian equation. कितना इजी हो गया. It is vector form, it is Cartesian form, over. देखो ये भी ऐसा ही खिलौना है, आने पर शांति थी रमीलो. Find the Cartesian equation of line which passes through this point. અહીંયા જો જ્યોમેટ્રિકલી તમને બતાવું તો લાઈન ઇઝ ગિવન, તમને લાઈન આપી છે એટલે એના ડાયરેક્શનમાં વેક્ટર બી આપેલો હશે, उसके डायरेक्शन में वेक्टर भी दिया होगा, और एक इट इज गिवन लाइन दैट इज GL. नाउ इट इज रिक्वायर्ड लाइन मींस RL. इट इज रिक्वायर्ड लाइन मींस RL which passes through a bar is equal to the elements are -2 4 -5. तो हमें ये लाइन का इक्वेशन निकालना है, वो भी सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन फॉर्म में. सी हियर x plus 3/3 equal to y minus 4/5 equal to z plus 8/6 is in the direction of, देखो मैं सिर्फ बी बार मतलब डायरेक्शन वाले एलिमेंट्स डिफाइन करूंगा. सेकेंड थिंग आपको ये भी चेक करना है कि ये जो फॉर्म है वो एग्जैक्ट हमारी फॉर्मूला से मैच होता है कि नहीं, या अंदर कोई मसाला डालना है. तो देखो आपके पास क्या होना चाहिए, द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड शुड बी 1 और बीच में माइनस होनी चाहिए. सो एवरीथिंग इज ओके. हम इसके लिए कहेंगे विच इज पासिंग थ्रू -3 4 -8 and in the direction 3 5 6. So it is the form, right? Now is in the direction of, तो मुझे सिर्फ डायरेक्शन की जरूरत है, पॉइंट की मुझे कोई जरूरत नहीं है. So we will write therefore direction of, see direction of required line is parallel to given line. तो ये गिवन लाइन की डायरेक्शन हो गई, बी बार इज इक्वल टू, देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन विल बी बी बार इज इक्वल टू 3 5 6. आप यहां पे लिख सकते हो कि માંગેલી રેખાની દિશા b બાર is equal to 3 5 6 થાય. तो पॉइंट तो हमारे पास है, अब सिर्फ और सिर्फ मुझे डायरेक्शन चाहिए थी, वो भी मिल गई. देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन passing through which point, a bar is equal to -2 4 -5 and having direction that is b bar is equal to 3 5 6.
हमें सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है। देखो इक्वेशन आपको पता है, फॉर्म इज हियर। सो दीज आर x1 y1 z1, ये बनेंगे b1 b2 b3 एंड द इक्वेशन विल बी x माइनस x1 अपॉन b1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b2 इज इक्वल टू z minus z1 upon b3, which is required line, which is required line. कितने इजी सम्स है जे માંગેલી રેખાનું સમીકરણ છે. ક્લિયર પોઈન્ટ? સો પ્લીઝ રાઇટ ડાઉન ધીસ. ચલો ક્વેશ્ચન નંબર 7, બધા જ ઈઝી ક્વેશ્ચન્સ છે, બહુ શાંતિથી જોજો, આવડી જશે. The Cartesian equation of the line, write its vector form. કાર્ટેશિય સમીકરણ આપેલું છે અને માત્ર સદિશ સ્વરૂપ લખવાનું છે, ફોર્મ ખાલી ચેન્જ કરવાના છે. જો given line એટલે કે આપેલી રેખા, given line that is x minus 5/3 equal to y plus 4/7 equal to z minus 6/2 is passes through. चलो, which point is here? A bar is equal to 5 minus 4 6. आप समझ सकते हो. And having direction b bar is equal to, देखो कौन सी डायरेक्शन है. देखो आपने देख तो लिया होगा कि यहाँ पे x y z के जो कोएफिशिएंट्स है वो 1 1 1 है और बीच में माइनस तो हम लिख सकते हैं ना, भी समझ सकते हैं. तो डायरेक्शन भी हमें मिल गया, दैट इज 372. तो जो તમે આમ લખી શકો કે આપેલ રેખા એ બિંદુ a બાર માંથી પસાર થાય છે અને એની દિશા આ છે. So we have need of vector form. Therefore vector equation, vector form of the line is r bar is equal to a bar plus lambda b bar, where lambda belongs to r. What is a bar? A bar is 5 minus 4 6 plus lambda into p bar is 372, where lambda belongs to r, which is required equation, જે માંગેલું સમીકરણ છે. કેટલું ઈઝી છે, खाली कार्टेशियन માંથી सदिश लावानु छे. हमें सिर्फ और सिर्फ कार्टेशियन में से वेक्टर फॉर्म लिखना था और कुछ नहीं, एवरीथिंग यहाँ पे दे रखी थी. चलो क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट passes through origin and 5 minus 2 3. मतलब ઉગમ બિંદુ અને 5 2 3 માંથી પસાર થતી રેખાના સદિશ અને कार्टेशियन समीकरण मेळवो. कितना इजी हो गया. देखो मैंने इसे a और इसे b मान लिया. a बार दैट इज ओरिजिन is a 0 0 0 and b bar that is given is 5 minus 2 3 is given here में दिया हुआ है. Now equation of line passing through two distinct points है हमारे पास. कौन सी फॉर्मूला है? Therefore equation of line in कार्टेशियन फॉर्म. मैं पहले लिखूंगा कार्टेशियन फॉर्म. હું એનું કાર્ટેશિય સ્વરૂપ લખું છું. જોતા રહેજો. x minus x1 upon x2 minus x1
is y minus y1 upon y2 minus y1 is z minus z1 अपॉन z2 माइनस z1। इसे हम x1 y1 z1 और इसे अगर हम x2 y2 z2 कहे तो इक्वेशन बनेगा x माइनस 0 अपॉन 5 माइनस 0 इक्वल टू y माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0 is z माइनस 0 upon 3 minus 0. So it will be x upon 5 equal to y upon minus 2 equal to z upon 3. ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म। नाउ वेक्टर फॉर्म। नाउ वेक्टर फॉर्म मतलब सदिश स्वरूप, दैट इज r bar is a bar प्लस लैम्बडा इंटू, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि b बार माइनस a बार, ये आपको पता है वेक्टर लेंथ सेगमेंट AB, राइट। सो बस आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ही करना है। व्हाट इज a बार, दैट इज 0 0 0 प्लस लैम्बडा इंटू b बार माइनस a बार 5 माइनस 0 माइनस 2 माइनस 0 and 3 minus 0. So this is the required vector form. ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म, ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन which passes through two distinct points. આપેલા બે ભિન્ન બિંદુઓમાંથી પસાર થતી રેખાનું કાર્ટેશિય સમીકરણ અને સદિશ समीकरण। कितना इजी है। अब यही सम हमें यहाँ पे वापस दिया हुआ है। किस फॉर्म में दिया हुआ है? तो यहाँ ओरिजिन ना बदले, बीजू पॉइंट आप्યું છે, मेथड सेम रहेगी। चलो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन दो पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें थ्रू। फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज a बार इज इक्वल टू 3 minus 2 minus 5 3 minus 2 minus 5 and b bar is equal to 3 minus 2 6। b bar is equal to 3 minus 2 6। कितना इजी हो गया। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल द कार्टेशियन फॉर्म, according to this formula we have x1 y1 z1 and x2 y2 z2। આપણને x1 y1 z1 અને x2 y2 z2 આપેલા છે। so x minus x1 upon x2 minus x1 means 3 minus 3 equal to y minus y1 upon y2 minus y1 means minus 2 plus 2 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। अब जनरली हम ये फॉर्म नहीं लिखेंगे बिकॉज हियर द डिनोमिनेटर इज बीइंग 0, सो हम ऐसे लिखेंगे therefore x minus 3 upon 0 is equal to y plus 2 upon 0 is equal to z plus 5 upon 6। तो लिखेंगे कैसे हम इसे हम ऐसे लिखेंगे इक्वल टू के, देयरफॉर सी, और आप लिखो लेमड़ा भी चलेगा। सो इसे मैं ऐसे लिखूंगा, आपको ये मैंने समझाया हुआ है, z plus 5 upon 6 is equal to lambda। now compare this with them, so x minus 3 equal to 0 comma y plus 2 equal to 0। आप ये फॉर्म में भी लिख सकते हो। जनरली डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखा जाता, इसलिए हम ये फॉर्म लिखेंगे। आई डोंट नो बुक में कौन सा फॉर्म दिया हुआ है, बट ये फॉर्म एकदम परफेक्ट है। अगर बुक में आप देख लेना, जो भी फॉर्म है वो आप लाके लिख लेना। बाकी दिस इज द राइट वे, राइट, वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। जब डिनोमिनेटर 0 होगा
मीन्स डायरेक्शन का एलिमेंट 0 होगा, तो हमें इसे ये फॉर्म में लिखते हैं। अभी मैंने फर्स्ट लेक्चर में सिर्फ ये इक्वेशन के लिए स्पेशली टाइम दिया था, आपको याद हो तो वो अगर कंफ्यूजन हो तो वापस एक बार देख लेना, मैंने वहां पर ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन की हुई है। अच्छा, ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। नाउ वेक्टर फॉर्म। उसकी फॉर्मूला है आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा इंटू बी बार माइनस ए बार, वेयर लैम्बडा बिलोंग्स टू आर। चलो, व्हाट इज ए बार? ए बार इज 3 minus 2 minus 5, 3 minus 2 minus 5 plus lambda into b bar minus a bar, 3 minus 3 0, minus 2 minus minus 2 0, 6 minus minus 5 11। एक मिनट, यहाँ पे मुझे 6 minus, हाँ 6 minus minus 5 मतलब 11 लिखना है, सॉरी। So we will write here 11 because it is minus 5. हाँ, x2 minus x1. Okay. Where lambda belongs to R, which is vector form. तो देखो, सारे आज के जो सम्स थे वो ऑलमोस्ट कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, इस तरह के सम्स थे। तो फॉर्मूला अगर आपने बराबर की होगी तो एक भी सम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। आटला दाखला तमने होमवर्क में आपको छू, सारे सम्स आपको 2 times इन होमवर्क एंड 1 time इन क्लास वर्क लिखने हैं। और 10th सम से वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टाटा।